हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, एंड नेक्स्ट व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स। तो उसमें हमने वेरियस ट्रेंड्स जो पढ़े थे उसमें हमने एटॉमिक साइज एंड वैलेंसी ट्रेंड्स कि कैसे वेरी करते हैं अलॉन्ग द ग्रुप्स अलॉन्ग द पीरियड। टुडे वी विल स्टडी अबाउट मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो जैसा कि हम पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं, इसमें जैसे सोडियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा जो भी मेटल्स हैं दे आर टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जो भी नॉन मेटल्स हैं जैसे सल्फर, क्लोरीन, आप ग्रीन कलर में देख रहे होंगे पीरियोडिक टेबल में, दे आर टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और जो मिडल में है जिगजैग सी लाइन पे बने हुए येलो कलर आप देख रहे होंगे, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सभी हैं मेटलॉइड्स या सेमी मेटल्स। वाई दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स या सेमी मेटल्स? बिकॉज these elements exhibit some properties of metals and some of non-metals. So this zigzag line separates metals from the non-metal, and along this zigzag line are the metalloids. ठीक है, तो अब हम जो प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे थे मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इन द चैप्टर 3 दैट मेटल are electropositive in nature. This means metals tends to lose the electrons while they form the bonds with some other element. कोई भी मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है नेचर में। क्यों इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है? बिकॉज इट टेंड्स टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स while forming bond, and when an atom will lose electron it will certainly be it will certainly have the positive charge. As the effective nuclear charge acting on the valence shell of electron increases across a period, the tendency to lose electron will decrease. So as you can see, we know that effective nuclear charge across a period increases because they have the same number of shells and number of protons are increasing, and effective nuclear charge in the force of attraction between electrons and proton increases. Hence the tendency to lose the electron will also decrease. So across the period when we move from left to right, the tendency to lose the electron decreases. But in a group, when we come from top to bottom, we have a new shell being added in an atom. जब भी हम किसी ग्रुप में डाउनवर्ड डायरेक्शन में टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं, फर्स्ट ग्रुप की ही बात कर लें तो जब भी हम लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम एटसेट्रा, जैसे जैसे हम नीचे को आते रहेंगे तो ग्रुप में हर एलिमेंट में हर नेक्स्ट पीरियड में एक एक्स्ट्रा शेल एड अप होती है, जिसकी वजह से द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन इट इज मच लेस, बिकॉज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर फार्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड दे कैन ईजिली बी लॉस्ट. हैंस दैट मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड एंड इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप. तो इससे हमें सीधा सीधा पता चलता है, क्योंकि अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है. जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो जो भी एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी कम होती रहती है. बट हम जब किसी भी ग्रुप में टॉप से बॉटम की ओर आते हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी किसी भी एटम की बढ़ती है. सो वी कैन से, एंड वी नो, we have read in the first line कि the tendency to lose the electrons while forming the bond that make an atom or
an element of an atom electropositive in nature. Therefore, we can easily say that metallic character decreases across a period and it increases down a group. Now, coming to the non-metals, which are placed in green color in the given periodic table, they are electronegative. Why they are electronegative? Because they tend to form bond by gaining the electrons. They gain the electrons from metals, yeah, elements which tends to lose the electron. Hence, if we say about the electronegativity, non-metals are found on the right hand side of the periodic table towards the top. We can see in this given periodic table. So this is all about this chapter. In this chapter, we have studied about the various types of attempts made to classify the elements, starting from the Daubeney's triads, then the law of octaves, then Mendeleev's periodic table, and at last modern periodic table. So this is all in this chapter which we need to learn. Now coming to the in-text questions after the modern periodic table. The question number 1, how could the modern periodic table remove various anomalies of Mendeleev's periodic table? जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में कुछ लिमिटेशंस रह गई थी, उनको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे दूर करता है? सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मॉडर्न जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल था वो क्या था. We know in Mendeleev's periodic table all the elements were arranged according to their atomic masses, but in increasing atomic masses. But in modern periodic table, elements are arranged in the increasing order of their atomic number. Nextly, we had seen in Mendeleev's periodic table, it cannot justify the position of cobalt before nickel because cobalt has higher atomic mass than nickel. But as per the modern periodic table, the atomic number of cobalt is less than that of nickel. Hence it justifies the position of cobalt before the nickel. Third thing, Mendeleev's periodic table cannot justify and it does not have the position for the isotopes of the metals. But according to modern periodic table, the isotopes could be placed in the same place as they have the same atomic number. Their atomic mass changes, not the atomic number. Hence, these anomalies are corrected in the modern periodic table. We have second question. Name 2 elements you would expect to show chemical reaction similar to magnesium. What is the basis for your choice? तो आपने मैग्नीशियम के जैसी केमिकल रिएक्शन देने वाले 2 सिमिलर एलिमेंट्स को नेम करना है और आपको रीज़न भी देना है कि क्यों आपने वो चूज़ किए. तो आपको पता है जो मैग्नीशियम है, इट इज़ अ ग्रुप 2 एलिमेंट. ओके, तो एनी ऑफ द ग्रुप 2 एलिमेंट्स, you can write any of the group 2 elements, may it be calcium or beryllium or strontium. You can write their names. And why did you choose them? Because these elements are in the same group and they have the same number of valence electrons, that is equal to 2. Now third, name
three elements that have single electron in their outermost shell. You have to name the three elements that have single electron in their outermost shell. So you can write it from the group 1 elements. Two elements that have two electrons in the outermost shells. So you can write them from the group 2 of the modern periodic table. Three elements with filled outermost shell. Any three elements which have filled outermost shell. So group 18 elements, all the noble gases, they have fully filled outermost shell. So you can write their names: neon, argon, xenon, etc. Coming to question number 4. Lithium, sodium, potassium are all metals that react with water to liberate hydrogen gas. Is there any similarity in the atoms of these elements? तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये सभी एलिमेंट्स जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो दे रिलीज हाइड्रोजन गैस. क्या इनके एटम्स, जो इन एलिमेंट्स के एटम्स में कोई सिमिलैरिटी है? यस, ऑफ कोर्स, दे ऑल आर group 1 elements, and in group 1 the valence electrons are same, that is equal to 1. They all have single valence electron. Second, helium is an unreactive gas. Neon is a gas of extremely low reactivity. What if anything do their atoms have in common? तो ये बात कर रहा है हीलियम एंड नियॉन, जो कि बहुत ही लेस रिएक्टिव हैं. तो इनके एटम्स में क्या कॉमन है? सो यू कैन फाइंड देम इन दी ग्रुप 18 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एंड इन ग्रुप 18 they have the common feature that their valence shell are fully filled. Their outermost shells are fully filled. That's why they do not react with any other element in normal conditions. Question number 5. In the modern periodic table, which are the metal among the first 10 elements? तो जो आपके फर्स्ट 10 एलिमेंट्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, इनमें से हाउ मेनी आर एटम्स? सो यू नीड टू फाइंड देम योरसेल्फ. Okay, it is very simple. You only have to find metals. Now coming to question number 6. By considering their position in the periodic table, which one of the following elements would you expect to have maximum metallic characteristics? तो आपको नीचे मेटल्स के नेम दिए हैं: Ga गैलियम, Ge जर्मेनियम, As आर्सेनिक, Se selenium and Be beryllium. So among this, beryllium has atomic number 4. It is placed in the group 2, and all other elements, gallium, germanium, arsenic, selenium, they are present in the period number 4. You can find them at period number 4 at atomic number 31, 32, 33 and 34. So we know as we move from left to rightward direction in any period, the metallic properties decreases. Hence among gallium, germanium, arsenic and selenium, gallium has the maximum metallic properties. Now we have only two metallic properties elements, gallium and beryllium. Beryllium is in period 2 and gallium in period number 4. And we know coming downwards in a group, as beryllium in second period and gallium in 4th period. So coming downwards, an atom tends to lose electron more, and if tendency is more,
it is more in electropositive and it shows more metallic character. Hence, gallium will be the most, it will have maximum metallic character. So these were the in-text questions. So you have to do these exercise questions yourself. Make a try to them. They are all very simple, and complete them. If you have any doubt in this chapter, please do write in the comment box. I will make sure to help you out. Please also do like the video and also subscribe my channel. Thank you.